Good morning, students. मोबाइल उधर नहीं होगा, यहाँ तो नहीं था। Good morning, students. Is the board visible now? Okay. Just since earlier there was a class of physical education, so the teacher need to change the position of the camera. Okay. So again, it is taking a lot of time for adjusting the camera. So now is it okay, students? Okay, so is the camera visible? Yes, good morning, student. So in our last live classes, okay, we were discussing on our history chapter 5, okay. So we were discussing on history chapter 5, weavers, then iron smelters, and factory owners. So this is the name of the chapter that we are currently discussing. Okay. So in our last video, in our last live class, we discussed about the topic, and the name of the topic is the words tells us the stories. Okay. Now in that topic, what we have discussed, that there are number of words. Okay. There are number of words which are currently being used in the different European languages. Okay. And all these words, like we discuss about the word muslin. Okay, then we discuss about one more word, that is bandhana. Okay, so all these words tells us a story of textile business between India and the Arabian and European countries. Got it? Okay. So as you know, I told you earlier also that in this chapter, basically we are discussing about the textile industry in India and how the arrival of British into India as a ruler affect the Indian textile industry. Okay, so
हमारा जो एंटायर चैप्टर है वो पूरा इस पर्टिकुलर थीम के आसपास वर्कआउट करेगा। गॉट इट? जो लास्ट लाइव क्लास था हमारा, in that live class we have discussed about these different words. Got it, students? Okay, so in that live class we discussed about the two words. Okay, one word was muslin and the second word that we used was bandhani. Okay, so these two words we discussed, okay, in last live class. Okay, in that one of the important word which we were not able to discuss. Okay, since this word we have to discuss in today's topic. So the name of the word is calico. CALICO. Okay, now when the Portuguese came into India, they reached a port called Calicut in Kerala. Okay, now all of you knows, we discussed a number of times also that the first sea route to India, the first sea route to India was discovered by Vasco da Gama. Okay, हमने कई बार इस चीज को डिस्कस किया है कि इंडिया का जो पहला सी रूट था वो किसने डिस्कवर किया था? वास्को डी गामा. Got it? So Vasco da Gama reached first at a place in India, and the name of the place is Calicut. Okay, Calicut is a coastal town in the states of Kerala. So Vasco da Gama पहली बार कहाँ पहुंचे थे? केरला कोस्ट पर. ओके, विच कोस्ट? केरला. और केरला में जो कोस्टल टाउन था उसका नाम क्या था? कैलिकट. गॉट बेटा? सो when Vasco da Gama reached Calicut, he stayed for around 4 to 5 months. वास्को डी गामा कैलिकट में कितने दिन रुके बेटा? 4 से 5 महीने. ठीक है. In these 4 or 5 months, Vasco da Gama did trade in number of goods and commodities. इन 4 या 5 महीनों में वास्को डी गामा ने बहुत सारे सामान कैलिकट से खरीदे. Got it? So Vasco da Gama purchased the items made of ivory. हाथी दांत से बने हुए सामान उन्होंने खरीदे. ठीक है. इसके बाद उन्होंने और क्या खरीदा? He has purchased different art items, jewelries. He also did the business in spices. So Vasco da Gama जब 4-5 महीने यहाँ कैलिकट में रुके तो he purchased number of items. What beta? So these items were the items made of ivory, different type of jewelries, okay, many other art items, spices. Okay, so along with all these things, Vasco da Gama also purchased what? Textile. Which textile? Cotton textile. So apart from spices and many other things, Vasco da Gama also purchased cotton textile. ठीक है. अब उन्होंने जब कॉटन टेक्सटाइल वहां से खरीदा, so that good quality cotton textile was given a name calico by the Portuguese traders. वास्को डी गामा पुर्तगीज थे और उन्होंने कैलिकट से क्या खरीदा? कॉटन टेक्सटाइल खरीदा. ठीक है. सो कैलिकट से जो कॉटन टेक्सटाइल उन्होंने खरीदा उसको उन्होंने क्या नॉमिनेशन दिया?
calico, ठीक है. Now how this word calico came? Cali cut, and what they have purchased? A cotton textile. So from calicut, what they have purchased? Cotton textile. Okay. So they have named that cotton textile as calico. CALI from calicut and CO from cotton. So that is what calico. कैलिको से उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल परचेज किया था. ओके, सो दे हैव गिवन द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल एज ए कैलिको. उन्होंने इंडिया के उस कॉटन टेक्सटाइल को किस नाम से पुकारना शुरू किया? दे स्टार्टेड कॉलिंग द इंडियन टेक्सटाइल एज कैलिको. इंडियन टेक्सटाइल को किस नाम से पुकारते थे? कैलिको. अरे गड़बड़ हो गया. Now is the visibility okay? Is the visibility okay, students? Okay. So since they purchased cotton textile from Calicut, they have given a name Calico. Okay. So calico is also a term used for Indian cotton textile. Okay. So what term the Portuguese used for the Indian textile? Calico. Got it, students? Okay. So these were the three terms which tells us the term muslin, then bandhni, that is bandhana, and calico. Now these are the terms which are still being available in the dictionary of many European languages. Got it? And it tells us that there was a big business of the Indian cotton textile in different European countries. Okay, so since that term calico we were not able to complete, and it is one of the important terms that we have to discuss again and again in this chapter. So I discussed today that particular term. Okay, now for today the topic according to our textbook we have to discuss is what? The Indian textile in European market. Okay. It is what? The Indian textile in European market. Now this is the topic that we are supposed to discuss today. Okay, but it took some time because we need to get the discussion on it calico. Okay, so before 18th century, okay, from many centuries till 18th century, the Indian cotton textile was very famous in different European countries. Okay, तो बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पर हमारा इंडियन कॉटन टेक्सटाइल बहुत फेमस था. Okay, and because of that what happens, the local producer, अब ऐसा तो नहीं था कि कपड़ा सिर्फ इंडिया में बनता था. The textile was also made in Europe. Okay, the textile was also made in Europe. So in European countries, what type of textile was prepared? The European countries, especially the Britain and England, prepared the woolen and silk textile. Okay, so England में कौन सा textile prepare होता था? Woolen and silk textile. Now when the Indian textile gained popularity in European market, okay, the local producer were
worried. If the Indian textile increase day by day in European market, then the sale of that textile would not be there. Okay, so they pressurize, okay, the government of their countries to put some ban on the Indian textile. Okay. So the producers, textile producers in England and other European countries. Okay, the textile producer in England and other European countries worried by the sale of Indian textile. Okay, so what actually happened? When the popularity of Indian textile increased day by day in European countries, okay, the local producer मतलब इंग्लैंड में ही वे लोग जो क्या करते थे, टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते थे. So the local producer in England were worried about the increasing popularity of Indian textile. हिंदुस्तान का जो बना हुआ टेक्सटाइल था, कपड़ा था, वो इंग्लैंड और बाकी की यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा सेल होता था. अब जब इंडियन टेक्सटाइल की सेल बहुत ज्यादा होगी तो लोकल में यानी इंग्लैंड और अदर यूरोपियन कंट्रीज में जो कपड़ा बनता था उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी. ओके, सो द लोकल प्रोड्यूसर्स were producing which textile? They were producing the woolen textile and the silk textile. Okay, so the woolen and silk textile producer in European countries, they were greatly worried about the popularity of Indian textile. Okay, वे लोग इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी से बहुत ज्यादा वरीड थे, परेशान थे. Okay, so what they did, they oppose. Okay, they start pressurizing the local government. Okay, so when they were worried, they protest against the import of Indian textile. They protest against the import of Indian textile. Okay, in England and other European countries. Okay, so when the local producers were too much worried कि इंडियन टेक्सटाइल इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हमारे कंट्री में सेल हो रहा है, ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सेल नहीं होंगे. ओके, सो व्हाट दे डिड, they protest against the import of Indian textile in England and the other European countries. उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड और अदर यूरोपियन कंट्रीज में इस टेक्सटाइल की सेल के अगेंस्ट में, ओके, they
did the protest. Because of that protest in 1720, okay, in 1720, the government in England, in 1720, the government in England, okay, passed an act. Okay, so 1720 में इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट बैन ऑन import of finished Indian cotton textile, ठीक है। अब 1720 में, ठीक है, जब लगातार लोकल प्रोड्यूसर्स की तरफ से क्या आना शुरू हुआ, प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। So when the local producers, local textile producers in England protest against the import of Indian cotton textile, okay, so what happens in 1720, the government in England में जो गवर्नमेंट थी, it passed an act, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कानून बनाया। क्या बनाया बेटा, कानून, ओके। the government has passed an act, गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, ठीक है बेटा, और उस कानून के हिसाब से they put a ban on import of finished Indian cotton textile। उस कानून के द्वारा इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल था, क्या था बेटा, कॉटन टेक्सटाइल। यस बेटा, एक्ट मींस लॉ, एक्ट का मतलब क्या है, लॉ है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ पास किया, एक कानून बनाया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ व्हाट हैपेंस, देयर वाज अ बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ finished Indian cotton textile। अब finished Indian cotton textile मतलब ऐसा कॉटन टेक्सटाइल जिसमें कलरिंग, डिजाइनिंग वगैरह एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड। तो जो एक कंप्लीट कॉटन टेक्सटाइल था, उस पर क्या लगा दिया गवर्नमेंट ने, बैन लगा दिया, ओके। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, द सेल ऑफ द लोकल टेक्सटाइल इंक्रीज वे लिटिल बिट। जो लोकल टेक्सटाइल था उसकी सेल क्या हुई बेटा, थोड़ी सी। To make a law, there is first debate, बेटा, in terms of civics, है ना, when we are discussing on political science, okay, and if we discuss on our country, in case of our country, now we are living in a democratic nation, we are living in a democratic nation. So when there is a democratic nation, certainly for making any law there should be a debate in the parliament, got it? So हमारी आज की जो प्रोसीजर है, in this procedure we have to do the debate, but during 1720 England was not a pure democratic country। हम कब की बात कर रहे हैं, 1720 की। उस समय पर इंग्लैंड क्या नहीं था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, ओके, गॉट इट। इट वाज ए मोनार्की, इट वाज ए मोनार्की। तो मोनार्की में क्या है, डिबेट डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हमें नुकसान हो रहा है, हम डायरेक्ट क्या बना देंगे, लॉ बना देंगे, गॉट इट बेटा। Sanjay, you have asked, sir, then European people didn't protested to not ban. Beta, listen. Now
कंसर्न अबाउट द बैन, है ना। इंडियन टेक्सटाइल को इंपोर्ट करने पर क्या लगाया गया, बैन लगाया गया, ठीक है बेटा। वी आर टॉकिंग अबाउट 1720। ड्यूरिंग दिस टाइम इंग्लैंड वाज नॉट ए डेमोक्रेटिक नेशन, इट वाज ए मोनार्की, ठीक है। 1720 को क्या था, इंग्लैंड वाज ए मोनार्की। तो मोनार्कियल रूल है तो राजा क्या करेगा, डायरेक्ट लॉ पास करेगा। ओके, नाउ संध्या वी कम टू योर क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप राइटिंग द कमेंट अगेन, यस सर, ओके। If you have any doubt, then please ask in a comment box. Okay? Yes sir, okay sir. Please don't write all these comments. Okay? So Sandhya, you have asked that the European people did not protest against the ban. Now the Indian cotton textile was very famous in European market. Got it? But if the local companies, the local producers are not able to sell their product in their home market, देखो क्या होता है बेटा, विदेशों का कपड़ा यदि इंग्लैंड में बिकेगा लोगों की डिमांड पे, तो ठीक है, लोगों की डिमांड है कि वी वांट टू परचेज द कॉटन टेक्सटाइल मेड इन इंडिया, परंतु यदि मेड इन इंडिया कॉटन टेक्सटाइल भी इंग्लैंड में बिकता रहेगा तो लोकल प्रोड्यूसर का सामान नहीं बिकेगा। अब यदि लोकल प्रोड्यूसर्स का बनाया हुआ कॉटन टेक्सटाइल सेल नहीं होता, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस लोकल कंट्री में ही डेवलप होंगी। लोकल प्रोड्यूसर जो लोकल बिजनेसमैन है उनका बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। When they lost their business, all the workers working in these textile factories, okay, they also lost their job. वो भी क्या करेंगे, अपना उनका जॉब छूट जाएगा, वे लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। Most importantly, the government of that country is not able to get the taxes or revenue that they are getting from the local producer. Okay, so कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि अपने ही कंट्री का बिजनेस खत्म होकर के और दूसरे कंट्री का क्या हो, प्रोडक्ट सेल हो। ओके, सो द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री नीड टू प्रोटेक्ट देयर होम इंडस्ट्री। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को अपनी ही कंट्री की इंडस्ट्रीज को क्या करने की जरूरत होती है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है कि दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट इतना ज्यादा ना बिके कि अपनी ही कंट्री के। बेटा इफ यू आस्क द क्वेश्चन वन बाय वन, okay, then I would be able to answer. So let the one question be finished. Okay, got beta? Let the explanation of one question be finished, because again then the comment box is going up and up and then I would not be able to see the next question. Yes, England was a monarchy. Got it beta? So it is not the Queen Elizabeth alone. Okay, she was a monarch. Queen Elizabeth was a monarch at that time. Okay, and monarch is a person in England who was taking the decision, but it doesn't mean that she alone is taking the decision. Okay, she had the group of ministers, she had a court like some system. Okay, तो ऐसा नहीं कि राजा अकेला डिसीजन लेता था, डिसीजन लेने के अधिकार थे उसके पास, but they have a type of government. उनके पास एक प्रकार की कोई ना कोई गवर्नमेंट होगी. The government was getting the inputs from the businessmen and the union of the businessmen or the traders. Okay, so whatever the inputs they get, accordingly the queen took the decision. Yes, any other question right now?
ठीक बेटा. So in 1720 the government in England passed an act to ban on import of finished Indian cotton textile. Okay, the most interesting thing, the act was known as, वो जो लॉ बनाया था ना बेटा, एक्ट बनाया था, उस लॉ को क्या कहा जाता था? द लॉ वाज नोन एज कैलिको एक्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, वो जो लॉ है उस लॉ को क्या कहा गया? द लॉ वाज नोन एज कैलिको एक्ट. ओके, सो द लॉ which was made to ban the import of Indian textile. Okay, the law was known as a Calico Act. उस लॉ को क्या कहा गया बेटा? Calico Act. Got it? Wait. Please stop writing yes sir. No doubt, sir. Okay. If you have doubt, only then please write the question in a comment box. Okay. Yes, Sandhya. Meaning of spinning jenny. Beta, for that we'll have a next session. In that one, we'll be discussing about all these things, that the innovations which are there in the field of textile industry. Okay. So that is what the act was known as a Calico Act. उस एक्ट को फिर क्या कहा गया बेटा? कैलिको एक्ट कहा गया. गॉड. नाउ आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज we'll try to take one single topic in one live session. Okay, हमारा जो पढ़ाई करने का सिस्टम है, बिकॉज वी आर ऑनलाइन है ना, सो हम कोशिश करेंगे कि एक सिंगल लाइव क्लास में हम क्या करें, एक छोटा सा टॉपिक कवर करें. ओके, सो दैट देयर वोंट बी एनी मिक्सिंग अप बिटवीन द टू डिफरेंट टॉपिक्स. ओके, दो डिफरेंट टॉपिक्स में क्या नहीं होना चाहिए? मिक्सिंग नहीं होना चाहिए. इसलिए हम लोग पूरे चैप्टर को ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में क्या करेंगे? डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि एक सिंगल पैराग्राफ या दो पैराग्राफ में यदि एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो रहा है, वी आर एबल टू वर्क आउट. ओके, सो इन नेक्स्ट पैराग्राफ there is little bit different topic, so it's better we'll take up that topic for tomorrow's session. Okay, again, okay, you have to read out the textbook with you, and the topic that we have started is on page number 83 according to the old textbook. The topic is Indian textile in European market. So today we discuss only one single paragraph. Okay, so tomorrow we'll continue with the same topic and discuss the next subtopic in the next paragraph. Okay, so thank you students. Goodbye. Thanks.